फिर ना अच्छा अभी आपने लिवर को देख लिया अच्छा फिर वही आप जो ना उसको करें व्हाई डोंट यू मैनेज योर मूवमेंट्स फ्रॉम दिस साइड थोड़ा सा पीछे हो जाए एंड यू विल बी एबल टू डू इट मच मोर एफिशिएंटली अभी देखो ना दिस इज आईबीसी ठीक है आईबीसी से थोड़ा सा और जाएंगे इस साइड पे तो देन यू गोइंग जैसे मैं उस पर मॉडल में बताया था कि यहाँ पे आपको ये उठा जाएगी ठीक है और विद दिस विद ये यहाँ पे और आपके आ जाएगी नहीं आपको बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स ये एओर्टा आ गया ना हाँ एंड स्लाइड पुश विद हाँ एक जस्ट हाँ स्लाइड पुश अलोंग दैट ठीक है चलो ओके गो अहेड So this is a 48-year-old male patient with no previously known comorbids. He presented to us with pain in the epigastric region since on and off since 1.5 years. His CT was done on 30th Jan 2020, which was unremarkable, and ultrasound was also normal, but his amylase was 700, TLC being 24.6. okay can you hear me Yes, we can. Okay, right. Here's a patient. He's a relatively young person who has presented with recurrent acute attacks of pancreatitis for the past many years, and CT scan has been done, which doesn't show any abnormality. Ultrasonography has been done, which doesn't show any abnormality. Dr. Abdullah is doing the endoscopic ultrasound, and he's right now at abdominal aorta. This is the abdominal aorta. Now the task is to find the cause of pancreatitis in this patient. How many of in the hall will like to do the endoscopic ultrasound in the absence of MR? What does the house say? Will you like to do MR first or you like to go for the endoscopic ultrasound first? Now okay fine, So- this is the celiac. थोड़ा सा मज़ीद अगर So clear हो जाए। majority said they will like a MR first. Okay, so in this case, MR has not been done. They've done the CT, and the CT is normal. They've done the transabdominal ultrasound, which is normal. I don't know whether the calcium triglycerides have been done in this patient or not, but probably they have not been done either. Calcium triglycerides, metabolic cause of pancreatitis has not been checked in this patient. Is this patient diabetic? Okay, this patient is not diabetic. No comorbids. Okay, right. This is the. I think it could be Now any. you've seen the could be a celiac. left gastric. Along the Yeah. celiac, you need to push your endoscope forward. Really have to all of that. Okay, fine. Go ahead. Fair enough. Usually MR. Now you need to identify the two vessels, splenic vein and splenic artery. These are two vessels that you need to identify. Unless you identified these two vessels, you will be nowhere. So as soon as we go past the celiac takeoff, we have to identify the two vessels. Number one, splenic artery. Number two, splenic vein. And then, okay, fine. You can see the two vessels. Okay, whenever you lost, it's best that you come back to the first position. Excuse That me, is sir. the aorta and Sir, celiac can I show takeoff. you pancreatic mass biopsy This is IVC. cells? Wasim, Yes, sir. laga do. Okay, sir. Ghiyas, I'm going to cut off from you for just for a couple of minutes, okay? Okay, fine. ये aorta आ गई तो aorta से आप celiac takeoff देखो. Celiac takeoff देखो. वसीम और स्लाइड है? क्या चाहिए? जी सर मेरे पास है Okay. सेकंड स्लाइड लगाओ। राइट सर 6 to 8 स्लाइड्स है मेरे पास Alcohol. History of alcohol intake. Cigarette. Okay, fine. Right. वसीम ये ठीक है ये स्लाइड ओके सर अच्छा, ठीक है।
slight push along. कितनों slight ने push पहले along. देखी हैं देखो ना pathology आप, हाँ, ये slides? seric take off है. This is the seric take off. तो इसके साथ इसमें साथ आपको आगे क्या जाओ. नजर आ रहा है? Big wheel away from you so that you may be able to go in. Slide along. Clumps आ रहे हैं Push, 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 push. one person at a time. Blood cells कहाँ पे हैं? ये talk नहीं होना चाहिए. ठीक है. Okay, fine. Should I help you? Push, 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 push. ठीक है, one thing, large, bizarre shaped, ठीक है. Okay. हल्का सा Fat cells, ठीक है. ये हाँ, Jenna, let's talk about के ठीक है. Now. ये नीचे किडनी आ गई. ये किडनी आ गई यहाँ पे. एग्जैक्टली प्लियोमॉर्फिज्म है, यानी कि और दूसरा ये कि अगर आप देखो ना यहाँ पे इस सेल को, इस न्यूक्लियस को कितना बड़ा है एज कम्पेयर टू के जो आरबीसीज कहीं के ये जो है ना पूरे वो नहीं है आरबीसीज फिल हुए हुए, लेकिन ये है कि इस न्यूक्लियस का साइज देखें एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है, इट्स लाइक 4-5 टाइम्स. दूसरा ये है कि दे आर लाइक वेरी इरेगुलर शेप्ड. स्लाइड में अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे सही तरह नज़र नहीं आ रहा. इफ़ यू लुक, यू सी दिस ब्लू स्पॉट्स इन देयर न्यूक्लियोलाई, जब आपको प्रोमिनेंट नज़र आने, it means lot of division of the cells are going on. So that is all these three features: big cells, also irregular, different sizes, nucleoli, and low cytoplasm. And also what they are doing is, like here, they're kind of clumped together. You don't really want that. Sometimes they are just spread out, separated from each other. Okay. Clumping is because of the way the slide was made. Really, they're just sitting on top of each other. But the cells, like they are separating, like trying to run away, like this is a separate, this is separate. Big cells separated, those are the real cancer cells. And here the clumping is they are on top of each other and not respecting each other, no boundaries. And so all these features of really a malignancy. Exactly. Splenic artery towards you, splenic vein away from you. Towards the tail. नहीं, आप बहुत प्रॉक्सिमल आ गए. एओर्टा आ गए. हाँ, हल्का सा आगे. हाँ, अब Muggy. टर्न राइट, टर्न राइट. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. टर्न राइट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. हाँ हाँ हाँ. With the आइए मज़ीद. टर्न, कीप टर्निंग राइट. नहीं, हल्का सा पुल बैक भी करते हैं जो मैंने वो है ना, बिग व्हील अप, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड स्लाइड पुल बैक. Towards me. हाँ, टुवर्ड्स यू. नहीं, टुवर्ड्स यू. क्लॉकवाइज इज लाइक दिस. देखो ना आपके स्ट्रक्चर. हाँ, इस साइड पे आपने आना है ना, जी जी. सो यू नीड टू टर्न लाइक दिस. Or coming towards tail. हाँ हाँ, टुवर्ड्स टेल. डू यू वांट टू गो टू द मैं टेल? neck की तरफ. अच्छा, नेक. वो ठीक है, अब नेक ही ठीक है. नेक को फॉलो कर दो. जी जी. फेयर ना. ठीक है, गुड. Right now, do you see any identifiable structure? Yes, no, no. So that means that you are lost somewhere. Whenever you lost somewhere, come back to the place where you can identify the recognized structures. Okay, now you can see something recognizable. This is recognizable. This is Splenic vein. नहीं, पोर्टल वेन है. पोर्टल वेन है. तो इसके ऊपर ये सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस आ गई. ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ गई. नाउ फॉलो द पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके, फॉलो द पैंक्रियाटिक डक्ट. ये एओर्टा आ गई. अब you come back bit too. हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है. ओके, फाइन. नहीं, अगेन यू लॉस्ट समवेयर. तो जब भी whenever you lost somewhere at your stage, it's important कि आप your identifiable structures वहाँ पे आओ. This is the identifiable structure. This is the vein, and try to find the pancreatic duct here by pushing the bring the big wheel all the way up. नहीं, पहले वो पोर्टल वेन देखें. पोर्टल वेन, हाँ,
Port vein को देख लिया. Now bring the big wheel all the way up. All the way up. हाँ. ये this is your pancreas. ठीक है. ठीक है. Slight pull back. Slight pull back. ठीक है. ये pancreatic duct की ये आती है. ठीक है. हेल्प करो. जी जी. चलो. ओके. ये देखिए. Again, this is the classical sonography of this. Now, pancreas is underneath your transducer. Slight rotation to the right, and you're going go down Towards neck. towards the neck. ठीक है? Slight rotation to the left, and you are going to the tail. ठीक है? Yes, this is the maneuver. ये देखा ना, ये pancreatic duct बीच में कट के आ रही है. This is the pancreatic duct. This is the pancreatic duct is going around. Over here, this is the pancreatic duct. ठीक है? Right. चलो. You need to play around the recognizable structures, whichever and wherever you find. देखो मूवमेंट्स ना, आप मूवमेंट्स यहाँ पे करने की कोशिश करो. आपके मेन मूवमेंट्स है, एक जगह पे आप पहुँच गए तो मेन मूवमेंट इज राइट एंड लेफ्ट, बिग व्हील अप, बिग व्हील डाउन. दिस इज समथिंग, दिस इज ERCV मूवमेंट. You need to come out of the ERCV movement. Station, big wheel up, big wheel down, right, left rotation. Clockwise, anti-clockwise rotation. ठीक है? ये जो ना, ये सबसे पहला स्टेप यही कि इस चीज़ को आप लर्न करो. In endoscopic ultrasound, it's stations. Number 1. Number 2, minimal movements in millimeters. Number 3, big wheel up, big wheel down, and clockwise and anti-clockwise rotation. ठीक है? Right. Every time I try to go towards the tail, always aorta somehow it comes. वो इसलिए कि you pull back. Okay. अभी भी you're trying to pull back from here. Okay. You're not trying to move from here. Big wheel up and down. Okay. Because the movements are just the millimeters. Over here, even the slightest movement will be in the form of centimeters. Right. Okay, so you're not interested in the aorta. Aorta is just a landmark. So is it now? What should I do if I have to go towards the tail? Tail First means- of all, identify the right structure. Here am I. This is the Yes, portal okay, vein. fine. The This is a portal portal vein. Yes. Big wheel up Yes. and clockwise Big wheel rotation. up. देखिए, ये देखिए. जी जी. ये मैं कर रहा हूँ. नीचे किडनी आ गया. जी. I can start to see kidney. ये किडनी आ गया. ये ठीक है. दिस किडनी. जी जी. हल्की सी जो है आपको दाएं बाएं की रोटेशन, तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर. Aorta. हाँ, एओर्टा कोई बात नहीं. उस पर Okay. ये आ गया ना आपकी किडनी. आपको किडनी इज अ बिग थिंग. Kidney आपको is a ये big देखो ना, दिस द किडनी. Absolutely. Absolutely. किडनी इज अ बिग Kidney थिंग. is a हल्का हल्का ये आप ऐसे से करोगे, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द Oh, स्ट्रक्चर. right, right. ठीक है. Absolutely. व्हाट एम आई डूइंग? Just a little movement. ये Yes. नथिंग बिग. Yes. आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश इन, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल बैक. और दूसरा है कि बिग व्हील अप, बिग व्हील डाउन. एंड विद द बिग व्हील अप, this is what I'm looking at. This is the area which I'm interested in. This is the vessel going to the, this is the vessel going to the hilum of the spleen. ठीक है? Right. And in between, this is the, this is the pancreatic tissue. ये बन रही pancreatic tissue.
Logic. Right. Now, if you want to go to the clockwise side, big wheel away from you, slight rotation like this. You're turning to the foot end side. There's the PD. Mhm. No pushing or pulling here now. Minimal pushing, pulling, millimeters. ये देखिए ना, ये this is the salt and pepper piece. This is the pancreatic duct. ये वो हिलने से दाएं बाएं हो जाती है, लेकिन ये pancreatic duct बीच में आती है यहाँ. ये फॉल आती है. ये bright hypoechoic, bright lines with a central hypoechoic area. ठीक है. तो इस एरिया में आपने एओर्टा, celiac axis, splenic vein, splenic artery, pancreas, pancreatic duct. Body. Clockwise rotation, you are going towards the pancreatic tail, where spleen, splenic vessels, and kidney. On the left side, meaning by counterclockwise, neck of the pancreas and portal vein. ठीक है, ये पोर्टल वेन कॉन्फ्रेंस नीचे बन रही है वाली. अब आप चलें अगले स्टेशन पे. हाँ, सामने आपके है उसमें. हाँ. अपनी आदत डालें छोटी स्क्रीन पर देखने की, बिकॉज ये बिगर स्क्रीन शुड बी फॉर यूएस. अच्छा, जब आपने मूव करनी है एंडोस्कोप, तो जो यूएस की इमेज है उसको भूल जाइए. देन कंसंट्रेट ऑन द एंडोस्कोपिक व्यू. नहीं, देखो चीज़ें अब यू गॉन बिट टू डाउन. तो आवर टारगेट इज टू गो टू दी ड्यूरल कैप. तो ड्यूरल कैप में अगर ये कैप के एरिया, तो विद अ लॉन्ग स्कोप यू हैव टू प्लेस योर ट्रांसड्यूसर लाइक दिस. सो यू नीड टू कम बैक, एंड देन once again with a long scope, with a long scope go in again. Now immediately suck out all the air. ठीक है. Now you see something over here. This is obviously a blood vessel. Yes. So once you have seen that this is a blood vessel, and this blood vessel has to be, if this is the duodenal fall, this has to be portal vein. So portal vein should be visible in a better form. Okay. This is liver. Yes. Oh, yes. So you're way too down. Okay. So pull back slightly, maintain the suction, pull back slightly. जी, कितना टाइम है? ये दिस इज गॉल ब्लैडर. बेटा 5 to 7 minutes. ये गॉल ब्लैडर है. तो गॉल ब्लैडर जब आ जाए तो उसका मतलब है कि आप कुछ ज़्यादा ही आ गए. Okay. ज़्यादा आगे. हाँ, ज़्यादा आगे चले गए. Right. Pull क्योंकि आपने तो उसको देखना ना, आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है. हाँ, अब यू कैन सी गॉल ब्लैडर विच इज़ वेरी नाइस. Ah, yes. There is no sludge, there is no gallstone. ठीक है. But then in a patient like this, we are interested in the gallbladder. हाँ, ये. With the long scope, ये ऊपर, I think this is CBD. This one is CBD. हाँ. And this is the portal vein. This portal vein, ठीक है. हाँ, ये इसकी इधर से साथ है ना, बहुत अच्छी ये नज़र आती है. ये सिस्टिक डक्ट भी उठ रही नज़र आती है. Okay. कौन सी sir? ये साथ ही है जो अभी ये अभी एंगल में आएगी ना, जब इकट्ठी होगी तो फिर दिखाता हूँ. ये तो CBD तो ही है ना. जी बिल्कुल. अब ट्रांसड्यूसर क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने चिपकाया, तो इसलिए जो CBD है वो तो CBD का मुझे थिक वॉल लग रही है. CBD भी compress हो रही है. CBD कंप्रेस होती है ना, देखो ना,
बिल्कुल compressed है, जी, जी। हाँ, ये CVD सारा, और हमने ये देखा कि CVD की वॉल थिक तो नहीं है। दिस व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। पहले जब मैंने देखा तो उसमें मुझे नॉर्मल लगी थी। सर ये वाली दिखा। portal vein है जिधर एरो है, हाँ, ये पोर्टल वेन दिखा है, जी, और दूसरी ओर देखिए ना, दिस इज ये इस लो विजन ऑफ सिस्टिक डक्ट है, ये वाली, ये मेन CVD है, ये सिस्टिक डक्ट है। Okay. बट देन वी डोंट सी एनीथिंग। intraluminal. हाँ, ये देखिए ना, मैं आई एम ट्राइंग टू ट्रेस इट ऑल द वे सिंस इट इज ओपनिंग इन दी ये एरो एम्पुला एरिया है। ये दिस इज एम्पला, ये PD, it's normal. This is the ampla, which is normal. अब इसमें आपको, this is main PD, this is cystic duct, this is the ampla, which is normal. इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं. This is the pancreatic duct, this is the pancreatic duct. ये. ठीक है? तो दो वेसल्स हो गए हैं, वो portal vein, दिस इज पोर्टल वेन, portal vein, यहाँ पे आपकी आर्टरी आएगी, यहाँ पे अलग गैस्ट्रोड्यूटल आर्टरी आती है। rest is all pancreatic head. या लाइक सो क्वाइट पॉसिबल कि ये केमिकल इंड्यूस्ड ही हो। Okay. अच्छा, अब आप जाएं डिसेंडिंग जोड़ना में, ये भी है ना इसमें। हाँ, अब आप जाएं डिसेंडिंग जोड़, यहाँ पे पहले आप कर लो, तसल्ली कर लो, आप अपने आप कंफर्टेबल करो। बिल्कुल इसको abut करके जैसे As soon as you enter on the posterior wall, हाँ, ये साथ ही ब्लड वेसल आ गई। जब ब्लड वेसल आ गई, सो यू हैव फाउंड योर लैंडमार्क। बोल जाए बाकी तो आप ना सक आउट दी है, हल्का सा राइट टर्न करेंगे तो यू स्टार्ट सीइंग दी राइट टर्न का मतलब है नॉट द लेफ्ट टर्न, राइट टर्न क्लॉकवाइज, तो यू विल स्टार्ट सीइंग दी CVD। हाँ, मेंटेन द सक्शन। हाँ, ये आना शुरू हो गया ना, ये ऊपर से CVD आना शुरू, ये is opening into the ampulla, हाँ, yeah. the arrow vein. या ये अब ये सिस्टिक डक्ट है, ये CVD है, ये सिस्टिक डक्ट है। सो एज सच वी डोंट सी एनीथिंग एबनॉर्मल इन द ल्यूमेन, क्योंकि recurrent pancreatitis the commonest causes Pancreas division, no, obviously alcoholism, bile, Alcohol, biliary biliary pancreatitis. So we need to exclude the possibility of any sludge or stone in the CVD. So it's not there. But then low original cystic duct by itself is one of the important cause of important risk factors. ऊपर से gallbladder है, which is normal. See, अब आप देखो कि somehow you're lost somewhere. हाँ, ये आ गया, ये. You don't see anything abnormal here. Pancreas is normal. Pancreatic duct is normal. Except for low origin of the cystic duct, all the other parameters are normal. ठीक है? चलो, अब चलते हैं डिस्टल ड्यूटनम में। पुश, एग्जैक्टली वही मैन्यूवर जैसे ERCP में। आइडेंटिफाई, हाँ ये, हाँ ठीक है, shortening करते हैं या नहीं? शॉर्टिंग करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह जैसे ERCP में शॉर्टिंग। ना ना, ये वाला नहीं, इसके बगैर शॉर्टिंग करनी। हाँ, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, हाँ, पुल बैक, हाँ, कीप पुलिंग, कीप पुलिंग, कीप पुलिंग, कीप पुलिंग बैक, कीप पुलिंग बैक, कीप पुलिंग बैक, वेरी गुड। थोड़ा सा और, हाँ, अच्छा, अब आप ये गॉन बिट टू डाउन, तो खींचते जाएं, खींचते जाएं। ना ना, इसको नहीं, इसको नहीं, वही आपकी जो ERCP वाली है ना, हाँ, कीप पुलिंग बैक, ये आपको किडनी आ गया। सो वंस यू सीन द किडनी, ये किडनी आया था, ये किडनी आ गई, दिस योर किडनी, ये किडनी आ गया। सो कीप पुलिंग बैक, keep pulling back, keep pulling back, keep pulling back. You will see the blood vessels. हल्का सा
राइट लेफ्ट मूवमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं से हाँ ये हाँ, कीप पुलिंग बैक, ये कुछ ब्लड वेसल्स आ रही हैं। नहीं देखो ना, आपका जो मूवमेंट है ये इस तरह देखो, लेट मी हेल्प यू, ये आ गया ना आपका। Oh, I think we were already there in the stomach. ठीक है? Once I've done that, now see the lumen. अगर lumen नजर आ जाए तब भी आपको पता था कि on this side of the lumen, ये kidney है, on this side of the lumen I'm going to find the pancreas. So I can ignore rest of the things. लेकिन for your sake, I think it's important to find ये इसकी आगे blood vessels, the spleen direction. So we are going to keep pulling back till such time that you find your identifiable structures. Right. Although I know okay, this is the pancreas. ये आ गई, ठीक है? Right. हल्का सा जो मूवमेंट होती है उसके साथ आते हैं, but then we are interested in this particular thing. तो ये this is our area. Right. ये duodenal fall है. This is the duodenal fall. So once we have seen the duodenal fall, we can forget about all the other things. तो हमने इसको pancreas को अपने transducer के नीचे ला के रखते हैं. This is the CVD, this is CVD, and this is the pancreatic duct. Logic. Right. और इस एंगल पे आमतौर पे आता है। Okay. 11 पे पैंक्रियास, 4 पे 7 पे पैंक्रियास, 4 पे सीवीडी। ये देखो ना, ये दिस इज 7 4 7 11 4 और दरमियान हल्की सी जब टॉर्क मूवमेंट देते हैं तो पैंक्रियाटिक 7 पे पैंक्रियास, 4 पे 7 पे लाए, हाँ ये सब pancreatic हाँ है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ गई, ये वाला, ये थिन सी पैंक्रियाटिक डक्ट। और जब आप हल्का हल्का जिगल करते हैं ना इस तरह, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर नजर आने लगेगा। 4 पे सीवीडी, वो ऊपर वो नजर आई थी, ये सेवन फोर दरमियान में जब इस तरह स्विंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो कर्व करती नजर आएगी। और यहाँ पे दो ही चीज़ें देखते हैं कि मैच तो नहीं है, और दूसरा है कि सीवीडी जो पैंक्रियाटिक डक्ट है सीवीडी को क्रॉस तो नहीं कर रही। ये दो चीज़ें हैं आपके इंटरेस्ट की। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा? ये नीचे जी जी ये स्फीयर मेसेंटेरिक ब्लड वेसल जो कि पैंक्रियाटिक ट्यूमर में इन्वेड होती हैं। This is the duodenal fall. This is the duodenal fall. These are the spherical mesenteric vessels. This is the pancreas. ये ऊपर CVD. So ऐसे I don't see anything abnormal. You want to do D2? D2 sir, D2. Okay, fine, go ahead. Are पेशेंट ठीक है? जी सर। D2, just like as if you're going into the papilla in ERCP, minus that the small wheel doesn't have to be touched. Go down, go down, go down, turn and pull back. Turn and pull back. Keep pulling back. Good. Now all the air out. Keep pulling till we see the structure.
हल्की सी rotation like this, हल्की सी rotation. ठीक है, okay, keep doing, keep doing, keep coming back, keep coming back, keep coming back. देखो ना, अभी ये आपको जो अगर ये फ्लूइड यहाँ पे इस तरह आए ना, that means कि your lumen is right there. अभी आपको lumen ऊपर नजर, so meaning by that you're probably in the fourth part of the duodenal cap, so you need to pull back. ये. Now you are reaching the duodenal fall. Yeah, this is the duodenal fall, and this is the pancreas. No way, no way, no way. नहीं मैं नहीं देख सकूँ Good. Good, shabash. Yeah. There you are. नहीं, अब you fall back. ठीक, keep doing. क्योंकि basically you're examining the pancreas all the way. It's all pancreatic tissue. This is all under the pancreatic. transfusion. Yeah. Sure. Now you have lost pancreas. Yeah. नहीं, this is now fat. The technique was okay, but Technique was good. Okay. लो बेटा, लिख लें. Any question on this patient? Everything is normal except that there is a low origin of the cystic duct from the intrapancreatic portion of the common bile duct. no insertion of system. ये पेशेंट बंद कर दीजिए.